Good morning, student. Differentiation question derivative পাইছিলো last class 5.3 question number 3 মানতে কৰা হ'ল আজি question number 6 ৰ পৰা start কৰিব লৈছো question number 6 কি আছে x cube plus x square y xy square plus y cube equal to 1 find dy dx ইয়াৰ পৰা dy dx উলিয়াব লাগিব আগৰ কোৱেশ্চন কিটাটো এটো both side dx কৰিব লাগিব ddx of x cube x square y xy square plus y cube ddx of 81 implies ddx of x cube plus ddx of x square y plus ddx of xy square plus ddx of y cube. 81 constant and 0. ddx of x cube. ddx of x cube by n formula apply हो ddx of x cube per n x to the power n minus 1. n means 3 x to the power 3 minus 1 means 2. या দুটা ফাংশন আছে x per y product में আছে ddx of ub formula apply हो ddx of ub means u dv dx plus v du dx x per আগৰ ৰাখিলো y ডেৰিভেটিভ কৰিলো next y to আগৰ ৰাখিলো x per ডেৰিভেটিভ কৰিলো similarly product में আছে একেটা ফৰ্মুলা apply हो x to আগৰ ৰাখিলো ddx of y square plus y square আগৰ ৰাখিলো dx by dx ddx of y cube we know that ddx of x cube means ddx of x to the power n means n x to the power n minus 1 similarly ddx of y to my x ले लो ddx of x cube means 3x square here y का करना हो plus 3y square ddx of x cube 3x square that means 3 into x to the power 3 minus 1 3x square और x की जगह कितनी है y तो y लिखो और y का करने y डेरिवेटिव करें dy dx y का फंक्शन ऑफ x ddx of y cube 3y square और y का करने को डेरिवेटिव करें x का करने लगाना है y का करने को dy dx implies 3x square x square dy dx y ddx of x square means twice x plus ddx of x square twice x and ddx of y square to y to power के y square to होगा 2 into y to the power 2 minus 1 means 2y 2 into y to the power 2 minus 1 2 into y और y का करना का डेरिवेटिव तो बोले y to बोले y is function of x plus y square dx by dx means 1 plus 3y square dy dx equal 0 এর যেটা dy dx का क्या मैं लेफ्ट साइड रखी और जेटा dy dx ना राइट साइड ले जाऊं x square dy dx plus x 2xy dy dx plus 3y square dy dx equal minus 3x square minus 2xy minus y square 3x square 2xy y square right hand side ले लो right hand side ले x square dy dx 2xy dy dx 2y square dy dx यहाँ पर भी dy dx के लिए कॉमन लो dy dx into x square 2xy 3y square
করে যাবা মাইনাসটা কমন নাও 3x স্কয়ার 2xy plus y square implies dy dx equal minus 3x square plus 2xy plus y square divided by x square plus 2xy plus y square. Next question number 8 to do. Question number 8 to আছে sin square x cos square y equal 1 यहाँ पर dy dx हो जाएगा इतना अगर both side dx करियो ddx of sin square x cos square y ddx of 1 constant derivative कोई 0 तो x तक लिखें ddx of sin x sin square x means sin x whole square plus ddx of cos y whole square dy by 0 ddx शेड्यूल अप्लाई करियो ddx of sin x तो मैं एक्चुअली है ddx of x square means twice x square means twice x x on the base sin x is 2 that means 2 sin x so sin x to x ले लो sin x to actually consider quantity x square means twice x 2x means x on the लो sin x अब x on the sin x का करना आपको सेम रूल अप्लाई करो sin x का डेरिवेटिव को ये देखो sin x सिमिलरली cos y तो एक्चुअली है लो ddx of x square 2x x means क्या होगा cos y और x on the क्या है cos y तो क्या करना है आपको cos y के डेरिवेटिव को यूजिंग सेम रूल okay sin x to actually I know ddx x square y से x means sin x आपको x हो जाएगा sin x का बनेगा sin x डेरिवेटिव सिमिलरली cos y to actually I know cos y डेरिवेटिव पहले 2 cos y और x हो जाएगा सिर्फ cos y का cos डेरिवेटिव 2 sin x ddx of sin x cos x plus 2 cos y ddx of cos y minus sin y और y को काटना है आपको dy dx equal 0 x और प्लस y x और प्लस y আছে y को काटना है y डेरिवेटिव को लेबो dy dx y is function of x এটা y को काटने लेस देन सेट लेकिन और dy dx को काटने और देखिए dy dx है ग्रेटर देन ले जाओ माइनस 2 cos y sin y dy dx equal minus 2 sin x cos x we have 2 sin x cos x means sin 2x 2 cos y sin y means sin 2y minus sin 2y dy dx 2 minus 2 sin x cos x sin 2x minus minus cancel implies dy dx equal sin 2x by sin 2y means sin 2x 1 by sin 2x cos x 2y the answer is next question number 9 को बोलो y equal sin inverse twice x by 1 plus x square আর আমরা দুটো মান ফর্মুলা ডিসকাস করেছি অলরেডি কিনা ফর্মুলা পাই যাই sin 2 থিটা
equal to tan theta by 1 plus tan square theta. tan theta एक्सप्रेस করলে sin 2 theta to tan एक्सप्रेस করলে 2 tan theta by 1 plus tan square theta হয়। cos 2 theta 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta और tan 2 theta 2 tan theta by 1 minus tan square theta। फॉर्मूला रखा हो यार फर्स्ट फॉर्मूला रखा हो यार कोई x और ভ্যালু tan theta বলি কনসিডার কইলো এখানে sin ইনভার্স है ওটা আমরা sin এর ফর্মুলা দিলাম यार sin इनवर्स का क्या है sin का फॉर्मूला sin थीटा फॉर्मूला sin थीटा में 2 tan थीटा by 1 plus tan square theta मींस मैं x की जगह tan थीटा लो ले x मींस tan थीटा कंसीडर करो 2 tan थीटा by 1 plus tan square theta हो 2 tan थीटा by 1 plus tan square theta मींस sin थीटा sin इनवर्स और sin तो कैंसिल हो এখানে मैं x এর ভ্যালু কিলো tan theta let x equal to tan theta यहाँ पर हम थीटा वैल्यू पाम theta equal tan inverse x therefore y equal sin inverse 2 sin theta 2 tan theta by 1 plus tan square theta implies y equal 2 tan theta by 1 plus sin theta sin inverse sin theta sin inverse और sin कैंसिल हो गया अब y equal to 2 theta हम थीटा में ऑलरेडी पाई थीटा मींस x equal if x equal tan theta then theta equal tan inverse x थीटा पे हम लिखो भाई tan inverse x y equal to tan inverse x এটা dy dx করি implies dy dx equal ddx of 2 tan inverse x ddx of tan inverse x already দিছিল ফর্মুলা ddx of tan inverse x means 1 by 1 plus x squared 2 into 1 by 1 plus x squared therefore equal 2 by 1 plus x squared next question y equal to tan inverse cos x minus x cube by 1 minus 3 x square y equal tan inverse cos x minus x cube by 1 minus 3 x square এর এটা ফর্মুলা আছে tan theta equal to tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta and a फॉर्मूला लगा लेते यार मैं x square into tan theta लो x square into tan theta ले फॉर्मूला अप्लाई करो ठीक tan theta minus tan cube theta by 1 minus 3 tan square theta को अप्लाई हो या रिजल्ट हो tan theta tan inverse और tan theta कैंसिल हो ठीक कर let x equal tan theta implies theta equal tan inverse x therefore y equal tan inverse tan theta
minus tan cube theta by 1 minus the tan square theta implies y equal tan inverse it already formula pale this means tan theta tan inverse again cancel jabo implies y equal theta the theta value was in tan inverse x 3 tan inverse x dy dx ले होगा dy dx equal फिर कांस्टेंट আগলে আছে এই कांस्टेंट तो इनटू है আছে dx of tan inverse x dx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square equal 3 into 1 by 1 plus x square 3 by 1 plus x square next question 12 goes question number 12 plus y equal sin inverse 1 minus x square by 1 plus x square यार cosine फॉर्मूला बोले थी इसमें आपको लगे cos थीटा फॉर्मूला लगता है cos थीटा में 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta এটো अप्लाई কৰিব यार x और थीटा tan थीटा ধৰিব let x equal এই ফর্মুলা কিটা মনে রাখলে গম পাম যে কি ধৰিব লাগিব ফর্মুলা কিটা মনে রাখাটো বহুত ইম্পর্টেন্ট let x equal tan theta equal tan inverse x therefore y equal sin inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta implies y equal sin inverse cos theta यार ऐसे sin इनवर्स है cos कैंसिल ना जाए एक cos थीटा रो में sin वाला कन्वर्ट কৰিব লাগিব আমি এটা ফর্মুলা পাইছিলো sin theta equal to cos theta equal to sin pi by 2 minus theta एक फॉर्मूला अप्लाई কৰিব লাগিব cos theta equal to sin pi by 2 minus theta sin ले कन्वर्ट কৰিব that means cos theta means लेकिन sin pi by 2 minus 2 theta y equal sin inverse sin pi by 2 minus 2 theta sin inverse और sin cancel जाबो y equal pi by 2 minus 2 theta dx equal to dx of dy dx equal dx of pi by 2 minus sorry here pi by 2 minus 2 tan inverse theta means tan inverse x theta equal tan inverse x আছে pi by 2 minus 2 tan inverse x pi by 2 एक constant 0 minus dx of 2 tan inverse x minus 2 अगला से dx of tan inverse x is 1 by 1 plus x square means minus 2 by 1 plus x square next question number 14
twice x into root over 1 plus 1 minus x square. यार x square ले लो sin थीटा लोगों को cos थीटा लोगों को जीरो ने डाल दिया हो let x equal sin theta, then we have theta equal sin inverse x. Therefore y equal sin inverse x means sin theta 2 sin theta into root over 1 minus sin square theta. We have sin square theta plus cos square theta equal 1 asile sin square theta plus cos square theta equal 1 cos square theta equal 1 minus sin square theta. Means cos theta equal root over 1 minus sin square theta. Sin square theta plus cos square theta equal 1, cos square theta equal 1 minus sin square theta implies cos theta equal root over 1 minus sin square theta. Root over 1 minus sin square theta means cos theta over. Y equal sin inverse 2 sin theta into cos theta. More equal to 2 sin theta cos theta means sin theta. 2 sin theta into cos theta means sin 2 theta. Y equal sin inverse sin 2 theta. Sin inverse और sin cancel देखो y equal to 2 theta. Theta means sin inverse x sin inverse x dy dx पे क्यों dy dx equal to constant आगे कैसे आएगा dx of sin inverse x. dx of sin inverse x means 1 by root over 1 minus x square means 2 by root over 1 minus x square. Sin inverse x means 1 by root over 1 minus x. Next question number 15 to this. Y equal sec inverse 1 by 2x square minus 1. क्वेश्चन को आप फॉर्मूला ले लो cos 2 theta equal already by heart formula cos square theta minus sin square theta. cos 2 theta means cos square theta minus sin square theta. এটো এনে লিখো ভাই cos 2 theta তিনটা রিজাল্ট আছে 2 cos square theta minus 1 এটা আছে এটা আইতো বলা cos square theta minus sin square theta এটা হলো cos square theta minus 1 1 minus 2 sin square আর টেনর ফর্মুলা অলরেডি দিলই cos theta টেনর রিজাল্ট দিলই ইয়ার মই x আর ললো cos theta দেখো 2 cos square theta minus 1 is cos theta দেখো 2 cos square theta minus 1 is cos theta x আর দেখা যদি মই cos theta ধৰি লও x means cos theta ধৰি লও 2 cos square theta minus 1 means cos theta লিখো 1 by cos 2 theta 1 by cos theta means sec 2 theta sec inverse of sec cancel karo let x equal cos implies theta equal cos inverse x. Therefore y equal sec inverse 1 by 2 cos square theta minus 1 sec inverse 1 by 2 cos square theta minus 1 means cos 2 theta. Sec inverse 1 by cos theta means sec 2 theta. Sec inverse of
sec cancel যাব 2 theta হবে y equal to 2 theta আর theta এর জায়গায় আমি পাবে 2 cos inverse x या dx expression therefore dy dx 2 का अगला कैसे आएगा 1 dx of cos inverse x dx of cos inverse x is minus 1 by root over 1 minus x square 2 into minus 1 by root over 1 minus x square means minus 2 by root over 1 minus x square okay आज क्लास मतलब 5.2 already complete हो गया next class 5.4 by start